Hello everyone, welcome back to SportsKhabri, Curious Harry, Indian Food and Football, and Arun Food. We're here to discuss some key players that we're looking forward to watching in the Merdeka Cup. We've only got a couple of days left. We're starting on the 13th against Malaysia, so we just thought we'll have a quick chat about the players that we're excited to see, the players that we think will create an impact, and other things related to this topic. Thanks everyone for joining again. Interesting. We've got only 2 days left, but it just feels like it's a long way. I don't know why, because we've had so much football in the for past month or so, and suddenly it's like there's no football. It's like 3 days. What are we doing? It's like I don't know. It's like 3 months. It feels like that. Hiren, first thoughts. Does it feel like Merdeka Cup is not coming only? Like it's taking so long. एग्जैक्टली 100% वही फीलिंग आ रही है कि भाई कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन उसमें भी उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं जितना मतलब एक होना चाहिए सो सडनली लग रहा है कि एकदम से मतलब क्या बोलते कि फुटबॉल खत्म हो गई है लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कल से मतलब कुछ इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल मैचेस भी होने वाले हैं दूसरे भी तो आई थिंक फिर से वो एक्साइटमेंट आ जाएगी आज एपोलो एफसी का जैसे बोल रहे लॉर्ड बेके बेनफिका के सामने था 7-0 से हार गई कल मनीषा कल्याण ने उस मैच को स्टार्ट किया था दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल कि हमारी प्लेयर्स है तो यहाँ पे बेनफिका की जो वुमेन्स टीम है लास्ट सीजन में उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेला था सो उनके सामने हम खेल रहे हैं सो दैट्स a good thing but definitely the feeling is similar जो आपने बोला कि थोड़ा सा ड्राई आउट लग रहा है कि भाई मैच ही नहीं आ रहे तो काफी जल्दी से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से भाई क्या बोलते 13 तारीख आए तो इंडिया वर्सेस मलेशिया का एक धमाकेदार मुकाबला हम देखें Yeah. Shan, do you like the international break? Because a lot of people don't like it. I mean, people prefer club football sometimes because international breaks, like Hiren said, it's very dry. So how do you take to international breaks? Suddenly it feels like nothing. See, there are two sides to it actually, basically. See, for a club, it's a very good actually. In one way, it's very good for a club to rearrange or regroup. I think somewhat if you are struggling in a league, in a bigger league, it's a good time for a club to just reshuffle and rethink on few plans and move forward. This gives them a good chance. And for few clubs like who have got many players playing for the national team, they can only pray that none of their players gets injured during this international break. So this international break has got two things. Basically, sometimes it's good for clubs, sometimes it may not be so good for clubs. So it depends on the situation where the club is in. So I think the teams who have got more and more Indian players, I think they would be praying that this international break, it is none of their players gets injured while playing for India, and the clubs who are struggling, like Chennai, if I see other clubs who are struggling, I think they would get that time to get settled in because not one barring Rahim Ali thing, I don't think any other player of that team is in their national team. They'll get the time to get this and reshuffle because the foreigners have also come in, and now you have that time to get acclimatized to the conditions, and the coach also gets the time to coordinate and get better results in the coming near future. This will help actually in that. Important point that Chan mentioned, injuries, and we'll talk about that now because before we jump into what we expect out of players, Lord Beck has mentioned Anwar, Subhashish Bose, Manveer Singh, Brandon are all injured. Any updates on injuries to particular players? Any news that we have as to who could potentially play in the match against Malaysia? Those four players I mentioned, I wouldn't say that they're injured. I would rather say they are carrying niggles. So Yes. otherwise, I guess they wouldn't have not traveled, or the clubs would have not allowed them to travel if they were really injured. So just a small clarification, and I hope we've got one more day, so hopefully all four of them will get to train tomorrow. So from that standpoint, that's very clear to clarify, and then pick the best 11 out of your overall 23 player squad and see whoever is fit, right? I think that's also a priority because after this whole Ashik incident with his ACL, with Mahesh Naurem also coming back to East Bengal with some sort of injury, I think it's very important that the players return to the ISL fit.
and that's going to be one of the big things. Give everything for the national team. So let's hope for the best. Yeah. Guys, any other updates on injured players? Because again, just before we move on, best to probably give out as much clarity as possible. I don't know any uh, apprehensions that these guys could potentially not appear in the starting 11 for Malaysia. I think let's wait for tomorrow. I think that's going to be we're 2 days ahead of the game. And therefore I would like to see tomorrow's training footage and pictures, and then I think that gives us a little bit more clarity. What's the status with all those players who've been mentioned? Are they fit? Are they not ready to go? And then accordingly, I think the coach will then build his starting 11. Okay, fair enough then. I think, Rahul, I will add one thing. I think what I'm hearing that, as Arunavada correctly said, that none of them had seriously injured in that way. And most likely, I need a confirmation by tomorrow. I can give you confirmation who are most likely to start on Friday. Because Anwar Ali and few of the players are in the starting 11. So I can give you assurance by tomorrow. Yeah. Well, guys, then just tune in tomorrow for another injury update. Okay, so let's get to it. Hiren, who are you most excited to see tomorrow? Then we've got some exciting guys who will take the pitch, but who are you most excited to see? I'm really excited to see Norem Messi because जिस तरह से उस बंदे का पिछले हीरो ट्राई नेशन से जिस तरह से उसने अपने आप को प्रूव किया इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हमने काफी सारे ऐसे प्लेयर भी देखे हैं कि जो आईएसएल लेवल पे ग्रेट पोटेंशियल होता है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उस सेम लेवल का परफॉर्मेंस नहीं रिपीट कर पाते, लेकिन नोरेम मैस ने वो करके दिखाया है कि ही हैज द ट्रू पोटेंशियल कि जो आपको एक हायर स्टैंडर्ड के मैचेस में भी उन्होंने जैसे जिस तरह से वो इराक वाला गोल था, दैट वाज अ क्वालिटी ऑल ओवर इट. सो मेरे को लगता है कि नॉरेम मैस विल बी द रियली क्रूशियल मैन फॉर इंडिया, बिकॉज देखिए सुनील छेत्री, संदेश जिंगान, गुरप्रीत सिंह संधू, चांटे, ये तो अब हमारे रेगुलर बन चुके कि इनके ऊपर तो आपको मतलब उनसे तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ पे ये तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, ये हमारे बैकबोन बन चुके हैं. लेकिन जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेनी पड़ेगी, उनको भी कंसिस्टेंट बेसिस पर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब जाके आप अब जो अच्छी टीमों है उनको हरा पाएंगे, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि आप लोअर रैंक टीमों को हराए. अब आपको जो रियल टेस्ट है आगे आने वाले जो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आर रियली क्रूशियल, एंड उसमें सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, ना सिर्फ कि हम ये 3 प्लेयरों के या 4 प्लेयरों के भरोसे रहे और सोचे कि भाई ये इनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट मैच में आ जाए गोल हो जाए, सुनील सर का वो एक मोमेंट आ जाए गोल हो जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा. इट्स टाइम कि अदर प्लेयर्स हैज टू स्टेप अप इन फॉरवर्ड लाइन आल्सो, इन मिडफील्ड आल्सो. मिडफील्ड में मैं एक्साइटेड हूं टू सी सहल कि किस तरह से वो अपने मोहन बगान के फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और किस क्या उस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट कर पाते हैं. Backline में I want to see Roshan, Akash, how they are going to do in the you can say fullback role. So ये सारे प्लेयर्स जो अभी यंगस्टर तो है लेकिन उन्होंने भी अब इनफ मैचेस मेरे हिसाब से खेल लिए हैं कि जहाँ पे हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि कंसिस्टेंट बेसिस पे वो भी डिलीवर करके दे. बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी नॉरेम मैस. Fair enough. MKD is saying Sal and Mahesh pretty much agreeing with what Hiren has just said. Shan, what about for you? Any players you're looking out for particularly? सब उससे पहले गाइस जितने भी लोग हमारे साथ सेंदा रुकना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े प्लीज गाइस सबसे पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए चारों चैनल को, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस पहले ठोक दीजिए फटाफट. प्लीज ये कर दीजिए भाई, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. सो बिफोर वी गो, ये आप जो बोले क्वेश्चन, आई थिंक राहुल, आई थिंक मेरे को जो लगता है जो प्लेयर्स से मैं बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वुड बी अनवर अली. कैसे खेलता है एक्चुअली में बहुत अच्छा, ही इज बीन डूइंग वेरी गुड इन इंडियन कलर्स. अच्छा, ही इज कम बहुत जल्दी, उन्होंने अपना जगह बना लिया, एंड ही इज अगर आर्गुबली अभी नंबर 1 सेंटर बैक है इंडिया का भी, इफ यू आस्क मी. सो उनका गेम कैसा रहेगा इन अवे एरियाज, कैसे खेलते हैं मलेशिया के वहां पर जहां पर वोकल सपोर्ट रहेगा मलेशिया का. आई थिंक वो प्रेशर. Just one more question again, sorry to cut you off. Do you think Anwar Ali, apart from Sunil Chhetri right now, is India's best player? Or just he's the consistency what he has shown, he's one of the best. I think he's one of the best, so I would say he's one of the best, because if you see Rahul Anwar how he has evolved in
1.5, 2 years in the national colors. I think a lot of credit to that guy. Actually, everybody knows his story, past story. That's a different thing. But when I remember when he scored a goal against Hong Kong last year in Kolkata, Salt Lake Stadium. From there to right now where he is, I think a huge respect for him and how he's playing for Indian national team in the back. I think that's one of the best defenders I think in the recent past. I think last time I remember praising so much. I think Mahesh Gowli, who is the assistant coach right now of Indian national team. I think after that I see technically, and I think as a whole it's a very good package, and I'm really excited to see him, and I will be excited to see how Mahesh plays. I think high expectation. Mahesh has again a player within a very less time. Mahesh has come to a party, and he has from the Tri Nation tournament where he was first selected, and from there how he's evolved national colors, and he's playing. I think he's another player. I think I'm really looking up to, and Sahal Abdul Samad, and I think I can't stop praising that guy. I think many of us thought that he was when he signed from Mohun Bagan, the pressure in Kolkata, how it get to him. But I think he's a person till now what he has performed. I think if he continues this way, I think Juan Fernando and his team should get the credit to get him signed. I think he's playing one of the best games in few time. I think for Mohun Bagan, so it's a good thing. I think these three players I'm really looking forward to. I think we have to think beyond Sunil Chetri, Sandesh Chingan, and Gurpreet Singh Sandhu, and these are the players who will take us forward, according Yeah, to me. fair enough. You've got somebody else in agreement as well. And Mindset's also saying Anwar Ali is the best in the country right now. For me as well, I completely agree. Anwar, your picks in terms of players, and do you agree Anwar Ali is probably the best player right now in India? Anwar Ali is one of the best because he is consistent in his performances, and I think that's the biggest problem we had now for years, right? You have players who has had one, maybe two good seasons, and then sort of has faded. We've got a lot of these players. Let's say current example, I would think, so to say, Bipin Singh could become one of those. Added to that long list of players who've had very good seasons, won the ISL, done everything right, but thereafter somehow has not been able to sustain it. Changte is in that danger as well. I think Lalinzola Changte needs to up his game in the next weeks and months. We need him in the national team, especially looking towards the Asian Cup. And therefore, yeah, that thing. And I'm not going to raise the topic of a player, a midfielder who's not in the squad, but who should be in the squad, and who's actually also one of the best players at the moment in the country. But yeah, that's that. Yeah, I don't know. I think for a very important point that you mentioned, I think I'm looking forward to seeing Changte play, because he's sort of in that zone where he's really fired last season, but he hasn't quite yet this season, for club at least. So I think for him to have a good couple of games, if we get those couple of games, is going to be very important to India's World Cup qualifier chances and his confidence as a player. Well, again, now in terms of goalkeepers, Hiren, if Amrinder does get the nod, will you be excited to see what he can bring? What if he can bring something different compared to Gurpreet? Definitely इसके बारे में दिन दिन थी कि of the Hiren, I think your voice is breaking. Amrinder, but Chopra. Hello. Guys, yeah, Hello. Hiren, your Voice break हो रहा है, हिरेन भाई. Sorry. एक second. Yeah. Until then, Shan, there are a couple of Hiren, it's still breaking, Hiren. Hello. Yeah, and still breaking. I mean, it's okay until then. Shan, there are a couple of people in the chat suggesting that Gurpreet has made a couple of mistakes in the past, and is that a sign that possibly we could give Amrinder a chance now
to really make the number one spot his? देखो ये तो है एक पार्ट. अगर मैं मान लूं जो चैट में बोल रहा है, आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू बहुत मिस्टेक कर रहे हैं. मैं कहीं कहीं मैं एग्री भी करता हूँ ये बात. ही इज डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स नाउ. एंड हाल फिलहाल में हमको याद है केरला ब्लास्टर्स वाला गेम भी याद है. एंड दैट दैट मिस्टेक कॉस्ट बीएफसी दैट गेम. अगर मैं देखता हूँ पहला मैच, सो उनसे उनके जैसे एक तजुर्बेकार गोलकीपर से हम ये उम्मीद नहीं रखते. बेसिकली उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो तजुर्बा है इंटरनेशनल फुटबॉल में, वो खेले हैं भारत की जर्सी में इतने मैचेस, तो उनसे मैं ऐसा उम्मीद नहीं रखता हूँ. बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल, जो आई थिंक हम लोग बात नहीं कर रहे, जो को ईगोस टीम मैच को मेरे को जो समझ में आ रहा है, ईगोस टीम मैच का जो प्लान है, वो आई थिंक वो मेरे हिसाब से उनका प्लेइंग 11 में गुरप्रीत सिंह संधू है और एशियन कप. बिकॉज तो एशियन कप का जो फील है, उनके पास जो तजुर्बा है. यहाँ पर मेरे साथ और एक मेरे साथ जो एक हमारे दोस्त बैठे हुए, हमारे दादा का जैसे 3 एशियन कप का एक्सपीरियंस होने वाला है, तो गुरप्रीत सिंह संधू का भी 3 एशियन कप एक्सपीरियंस होने वाला है. सो ये फैक्ट है. 2011, 19, 2023, तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है. बिकॉज देखो, एशियन कप में खेलना एक अलग एक्सपीरियंस होता है. जो आप आईएसएल में खेलो, कहीं पे भी खेल लो, एशियन कप है हम लोग का यूरो कप. अगर मैं सीधा भाषा में बजाऊं, आई थिंक जो सभी आदमी को समझ में आए, ये हम लोग का यूरो कप है. तो उस हिसाब से आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू, हालांकि हालांकि उनका फॉर्म अभी बहुत अच्छा नहीं है. इनफैक्ट अमरिंदर का फॉर्म भी ऑफ लेट उतना अच्छा है नहीं. अगर आप आईएसएल के गेम्स देखो ठीक से, उनका भी फॉर्म बहुत बहुत मतलब हम नहीं तारीफ नहीं कर सकते उनके फॉर्म का. सो मेरा मानना है गुरप्रीत सिंह संधू को ही रखना चाहिए. बिकॉज देखिए, एट एंड ऑफ द डे एशियन कप का जो माहौल रहेगा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो माहौल रहेगा, वो फील कर चुके हैं आप. और फॉर्म वाइज भी अमरिंदर सिंह बहुत ज्यादा कुछ आपको प्लेट में नहीं दे रहे. उनका भी फॉर्म स्ट्रगलिंग फॉर्म में है फॉर क्लब. सो मैं मानता हूँ गुरप्रीत सिंह संधू को लेके ही चलना चाहिए. बिकॉज इससे क्या होगा, देखो, वॉरियर्स ट्राइड एंड टेस्टेड वॉरियर्स, जो योद्धा को हम जो मैदान में उतरे हैं पहले, उनको ही खिलाना चाहिए. जो उनको फील है मैदान में क्या हुआ है, एशियन कप में क्या हो सकता है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्या हो सकता है. अमरिंदर को लास्ट मोमेंट में आप प्लेइंग 11 में डाल दोगे, तो उनके लिए भी मैं नहीं मानता. अमरिंदर इज गुड, अमरिंदर खराब नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. बट मेरा मानना है, जब एक्सपीरियंस का बात हो, आई थिंक इन टफ टाइम्स एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स. सो एक्सपीरियंस, तजुर्बा के साथ हम लोग को जाना चाहिए. आई विल गो विद गुरप्रीत सिंह. Fair enough. Now then, where does Vishal Kit stand in all of this? Because there are a couple of people suggesting that he could potentially be India's next goalkeeper as well. I think we've got 3-4 keepers, who have been doing well for clubs and have had sort of look-ins beside Vishal Khet, Gurmeet at Hyderabad, who's come sort of out of nowhere. We have Purbala Chempa. We've got Dheeraj Singh, not to forget. So we've got options for the future. But as Shayan was saying, my feeling would be going into that tournament, and experience does count. Big match experience does count. And this is something which most of our boys actually lack, if we're honest. Don't tell me that playing Lebanon or Iraq or Kuwait is big match. No. Big match means really biggies of Asian football. And we play them rarely, to never. So that is something which I feel, and that experience of ISL or playing in a packed, it's not that, it's the pressure of knowing that you're playing an opponent who is much, much superior than you. And on that front, Gurpreet has one advantage. He has those 3 years in Stabæk in Norway also under his belt. So he knows. And Gurpreet is one player who, despite having problems at the club, has always performed for the national team. So that should not be forgotten. And as Malik Arjun is saying, yes, it depends on defenders as well. Yes, how is your defense? Sandesh has been leaky as well in the recent past, and that's something. Anwar has been sort of our mainstay, has become our mainstay over the last few months as well. So, who are our wing backs? It's another conversation. Akash hasn't had the best of weeks in the last few weeks for Mumbai City. Are you going to go with Pujari? Are you going to try out Roshan? So therefore that's the main thing. Yeah. Interesting, because again, the keeping
choices are very, very interesting. The situation is very interesting, guys. अच्छा Everybody राहुल, just एक चीज है, yeah, 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 एक yeah, चीज sure. डू लाइक, तो आप डू लाइक द स्ट्रीम। और एक चीज यहाँ पर पार्थो बोल रहा है, बेस्ट बॉल प्लेइंग गोलकीपर एज विशाल काइत। आपको कैसा लगा? मैं राहुल आकर आपको मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है विशाल काइत को इस टीम में लुक इन देना चाहिए? बिकॉज इगोर स्टीमा जो बॉल प्लेइंग जो बात बोलते हैं, आपको लगता है कि इस सिस्टम में विशाल काइत बेटर फिट इन करेंगे, जैसे पार्थो बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में? In terms of ball playing, I think Amrinder is kind of the perfect balance for me because whatever I've seen, at least even for India, he has that ball playing ability and he's a pretty decent keeper. He's a good decent shot stopper, and that is kind of the perfect balance. Gurpreet struggles with the ball at his feet, although he's of course he's probably India's best shot stopper by far. He sometimes struggles with the ball at his feet clearly. Again, I remember we spoke about this the other day. Gurpreet's goal kicks, I think that really needs work because there's a lot of times when these goal kicks go to waste. It goes beyond the striker, way beyond the striker, and you're just wasting goal kicks there. And you want it to land somewhere between the striker and the winger, somewhere there, but it doesn't happen. Which is why I think Amrinder is a better option for me than Vishal Keth. Again, somebody who's played for India, reasonably more experienced, and kind of is giving you what Igor Stimac wants in terms of ball playing keepers. So I think there we find our balance. I've advocated him for him before, so I think I'll do हाँ, that तुमने until बताया then. था पहले, हाँ Yeah, लास्ट स्ट्रीम में exactly, आपने बताया था। exactly. Yeah, so I was getting to it, guys. Everybody, who please in the comments drop in the one player that you're really excited to watch going into this Merdeka Cup, or the one player that you're really going to keep your eye on because you expect performances for them, or whatever reason. Just let us know your reason and list down the players that you're looking forward to watch. Um, Another player that I'd like to throw in, I know we've spoken about him. It's Roshan Singh, but he hasn't had that national team experience. Now we've been talking about experience, big game experience. How does Roshan fit in? Because he hasn't. Nikhil Pujari has played at right back more often than not. So where does Roshan fit in terms of experience? We're advocating for him, but again, on what basis? Because like we just spoke about, he hasn't had that experience. Shayan Arnava. उन्होंने बताया, फिर मैं बताता हूँ। Roshan is one of those players, and he reminds me in that way a little bit of Mahesh Naurem, that fearless attitude, right? He just goes in and plays his game wherever you put him, and he tries to do his best. And therefore, he's that kind of a player that I would say I would like to see, because he is, as an all-rounder, he gives me much more potential value on the field than a Nikhil Pujari. But Nikhil Pujari has had certain performances which go his way. But then there are others which have not. Then, of course, we've spoken about, and mentioned Ashish Rai. There are also the other options of a Preetham Kotral is not in the squad. Rahul Beke is not in the squad. So therefore, that's the question, who is sort of the right player for that kind of position. Yeah, Shayan. आई थिंक इगोर का जो सोच है इस विचार में, इगोर मेरे को जो लग रहा है निखिल पुजारी के साथ ही जाएंगे, उनका जो सोच है उस पोजीशन में, आई थिंक ही विल नॉट चेंज। उनको कहीं पे चॉप एंड चेंज नहीं करने का है, बिकॉज उनको अभी आस्ते आस्ते मेरे को जो लग रहा है वो प्लेइंग 11 सोच लिया है फॉर द एशियन कप, और ज्यादा वो चॉप एंड चेंज नहीं करेंगे। अगर हाल फिलहाल उनके जितने भी अपने इंटरव्यू देखे होंगे, वहां पर उन्होंने एक चीज वो बार बार बोल रहे हैं पार्थिव गोगोई के बारे में, जब उनको पूछा गया वो बोल रहे हैं, नो आई थिंक आई राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू सी अ टीम, वी हैव ऑलरेडी मेड अ टीम। आई थिंक पार्थिव गोगोई को शायद इंक्लूड ना किया जाए फ्यूचर मतलब एशियन कप तक, बिकॉज उनका एक टीम बन चुका है। और ये बात भी है, हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, उन्होंने सेटलिंग 11 नहीं लिया है, सेटल 11 तैयार नहीं कर पाए लास्ट 4 साल से। हम लोग भी बहुत क्रिटिकल हुए हैं उनके बारे में, दैट उन्होंने अब कौन प्लेयर कहाँ खेलेगा, रोशन खेलेगा या कोई खेलेगा, कि किसको उन्होंने 4 साल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आस्ते आस्ते आई थिंक अगर आप देखोगे फ्रॉम ट्राई नेशन टूर्नामेंट, उन्होंने एक आस्ते आस्ते एक कोर सेटअप करना तभी से स्टार्ट कर दिया था। और अब देखो मोहम्मद यासिर, जो 2-3 साल पहले हमारे टीम के एकदम कोर में रहे, आज मोहम्मद यासिर
टीम के प्रोबेबल्स लिस्ट में नहीं है। तो अभी आस्ते आस्ते आई थिंक उन्होंने चॉप एंड चेंज करके बहुत चीज को सेटल कर दिया है। और अभी मेरे को नहीं लगता अभी नेक्स्ट 3 महीने में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आई थिंक ही विल गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, और शायद वही सही है, बिकॉज एक साथ जब ये एक टीम एकजुट होकर खेलती है उसी का रिजल्ट हम लोग को मैदान में देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, खेल फुटबॉल का खेल ऐसा ही है, जो आप जितना भी अच्छा प्लेयर्स हो, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, अगर हमारे के साथ प्लेयर के साथ तालमेल अगर नहीं रहता है तो आप मैदान में उसका रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो सबसे बड़ा चीज है तालमेल, और मेरे को लगता है तालमेल रहने के लिए आपको एक जुट टीम चाहिए जो बहुत दिन से एक साथ है, और इकोस्टी मैच ने अपना टीम बना लिया। मेरे को नहीं लगता ज्यादा चॉपिंग चेंज होने वाला है यहाँ से। Very interesting. And just taking a few comments, guys, in terms of players to watch. Football Vakta saying Mahesh, Mindset saying Sahal, uh, John saying Mahesh and Brandon. So Mahesh is obviously the one I think most people are excited to see. But there's one interesting one here, which is, of course, Brandon, because we've spoken about this. We don't know if he's going to get the game time ahead of Sahal, the two central attacking midfielders. Let's quickly touch upon them. Another, is it a different test for Sahal? Because although he's been really good for club, we've seen some frustrating moments for country. Is it the chance for him to put all of that to bed and to kind of show that he has really matured as a player in the past few months? He has upped his level, very simply said. I felt he was sort of stuck in a sort of a loop at the Blasters. And I remember Eko Shatori a few seasons back was going crazy, whenever saying it again, this guy has so much of talent. He's not doing this. He's not doing that. He needs to do this and then that. And maybe this change from Kerala to Kolkata has been good for him. Surely Juan Fernando needs to be complimented that he's taken this player to the next level. So now it's the question of, can he replicate that form on a consistent basis in an India shirt? Because if he doesn't, there are other players, there are options in there. And that's something, again, as I said yesterday as well, or the day before yesterday as well, in attacking positions, we have options. It's not like in defense or as strikers where we're struggling. We have attacking options on the wings and even in the middle. Yeah. But in terms of expectations, I don't know, how big are they for Sahal? See, in the Merdeka Cup? A creative player like him, with the talent that he has, expectations will be higher than someone who's sort of playing as a holding six. Your expectations from a Sahal, a Brandon, a Mahesh now as well, a Changte, a Liston Colasso. If Ashik is fit, Ashik, Manveer Singh, Sunil Chhetri is higher than what you would expect, let's say, from a Suresh or a Jeekson or whoever is playing in that position. Yeah, fair enough. Very interesting point, of course, there, because at the end of the day, it's a game of goals and you need to score to win. And at the end of the day, the eyes will be on you. Speaking of goals, Shine, expecting Sunil Chhetri to get on the score sheet? हाँ, ये तो हम लोग करेंगे ही ना, मतलब सुनील छेत्री तो हमारे लिए गोल करते हुए आया है। अगर आप इंडिया टीम का देखो, लास्ट 10-15 मैच का अगर रिकॉर्ड देखो, लास्ट ईगोस्टी मैच का एरा में सुनील छेत्री ने ही हम लोग को निकाला है बहुत सारे मैचेस में, जहाँ पर गोल लेस हो सकता था। 1-0 हम लोग ने जीता है, 2-0 हम लोग ने जीता है, ओनली बिकॉज ऑफ सुनील। तो सुनील गोल करेगा, एक्सपेक्टेड है, ये तो एक्सपेक्टेड ही है वो गोल करेंगे। और वो नहीं गोल करेंगे तो कौन गोल करेंगे, ये बात ये कि कोई और खेलेंगे भी नहीं, वही खेलेंगे। सो मेरे को नहीं लगता सुनील छेत्री खेलेंगे तो वही गोल करेंगे। और देखो, सुनील छेत्री के ऊपर बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है, बिकॉज वो इंडियन फुटबॉल के पोस्टर बॉय है। आज इंडियन फुटबॉल जो है, जो जितना भी रीच है, उस आदमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनके थ्रू ही इंडियन फुटबॉल को थोड़ा मिलता है, क्योंकि वो उनका एक है वैल्यू है मार्केट में। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो गोल करेंगे। मलेशिया का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे को लग रहा है, बिकॉज हमारी टीम उतनी अवे मैचेस नहीं खेली हाल फिलहाल, अगर आप देखते हो।
अगर ये अवे मैच अगेंस्ट अ गुड होम टीम, बिकॉज अगर आप देखोगे थाईलैंड में भी हम लोग खेले थे मगर होम टीम से हम लोग मुलाकात नहीं हुआ था हमारा, इराक के साथ खेले थे, उसके बाद लेबनान के साथ खेले थे। तो ये वाला गेम विल गिव एस एक होम टीम विद अच्छा स्टेडियम है, लगभग कैपेसिटी 80,000 के ऊपर है। अरुणावत मैं सही बोल रहा हूँ ना, 80,000 के ऊपर है कैपेसिटी उसका, 80,000 के ऊपर स्टेडियम है और मैदान फुल रहेगा। फ्राइडे आई थिंक इज हॉलीडे देयर, तो आई थिंक दिस इज अ गुड क्राउड देयर। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर इंडियन प्लेयर्स। आई थिंक सुनील छेत्री का रोल वहीं पे इंपॉर्टेंट रहेगा, गोल से भी ज्यादा मेरे को जो इंपॉर्टेंट रहेगा उनका रोल, वो टीम को कॉन्फिडेंस देंगे क्योंकि उनको तजुर्बा है अवे में खेलने का। उन्होंने 2019 में खेला है यूएई के साथ वो मैच अवे में, उनके पास वो एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब गेम में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि हमारे जो यंग लॉट है उन्होंने ज्यादा, अगर आप देखो हाल फिलहाल में वो जो भी खेले होम में खेले, अगर आप लास्ट ईयर से लेकर अभी तक देखो तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं चाहता हूँ सुनील छेत्री टीम को आगे से मैं चाहता हूँ, आई एम श्योर वो करेंगे भी, आगे से लीड करे और टीम को जिताएंगे। मैं हाल फिलहाल एक और टीम मैच को विश भी किया हूँ आज। मैं देखना चाहता हूँ इंडिया जीते, इंडिया बिकेम उनके कोचिंग में इंडिया पहला बार मर्डेका कप जीते। और आई थिंक अच्छा लगेगा अगर इंडिया जीते मर्डेका कप, बिकॉज अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पैलेस्टाइन भी नहीं है। आई थिंक दिस अ गुड चांस। पहला मैच बहुत टफ है हमारे लिए, बट मैं श्योर हूँ हमारे जो प्लेयर्स है काफी काबिल है और वो अच्छा रिजल्ट देंगे मैदान। Kind of, I don't know, MKD saying Suresh, he's looking forward to watching Suresh. Important player because no Jackson, which means that there is a good chance that he's going to play in that sort of second pivot role. And how important is it for him, because he has to stake a claim that he is one of India's top defensive midfielders, not had the best of club season so far, and he's clearly behind Jackson. So how important is it for him to do well here? Not only for him, but generally for the whole squad, it's very, very important to do well, right? We spoke about it at length yesterday, that if India lose, it's 90 minutes of football in this FIFA window. So you will lose that opportunity of a second game. And training can never replace playing. You know, a match is a match. So therefore, Suresh has the task on hand. We saw against Mohun Bagan, for example, where he picked up the red card, that he's not there yet for the season. So therefore, I think Suresh needs to pick up, and it's not easy. It will be a challenge. Yeah. In terms of Anwar Ali's injury, Pawan's asking, we've already clarified at the beginning of the show, Pawan, that it looks like they're all niggles to all the players who've been mentioned, because otherwise they wouldn't have traveled with the squad, which is the most reasonable explanation. But if there are developments tomorrow, we'll know, and then we'll update you accordingly. And yeah, guys, in terms of हमारे 4 broadcast, चैनल्स में पता चल जाएगा आपको, आप लोग Yeah. हमारे 4 चैनल्स में अगर आप ट्यून रहोगे आपको पता चल जाएगा। We will keep you informed. Yes. in terms of broadcast, it has been informed that Eurosport will be broadcasting the Merdeka Cup in India, so you can watch it on you can watch it on Eurosport itself. Any streaming platforms that you guys have any updates on? हमारे जो एआईएफएफ के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी दिखाया जाएगा ये मैच। आज कंफर्मेशन आ गया है, 6:30 बजे गेम है फ्राइडे को, शुक्रवार का दिन हम 6:30 बजे गेम स्टार्ट हो रहा है। सो आप लोग सब ट्यून इन कीजिए। आई थिंक हमारे जो नेशनल टीम खेलेगी, आप लोग का सपोर्ट, आप जो मलेशिया नहीं जा पाए, पॉसिबल नहीं है जाना, तो आप टीवी में रख के नेशनल टीम को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज यही मौका हम लोग दिखा सकते हैं दैट एटलीस्ट टीवी में तो हम लोग सपोर्ट कर ले। ये तो बहुत बड़ा बात है। तो एटलीस्ट जब एक हम लोग बार बार बोलते हैं हम लोग को नहीं मिलता है, यूरो स्पोर्ट्स एक आगे आया है, तो उनको भी पता चले इंडियन फुटबॉल का टेकर्स है। तो अच्छा है अगर आप लोग सब जुट होके अगर देखें, आई थिंक ये अच्छा एक निदर्शन रहेगा सबके लिए। तो अच्छा है आप लोग देखें मैच, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इंडियन टीम कैसे खेलता है। आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टेड। आई थिंक मल्लिकार्जुन ने बहुत एक अच्छा कमेंट दिया वहां पर, उन्होंने बोला है मर्डेका कप इंडिया अगर जीतता है फैंस में फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई थिंक मल्लिकार्जुन भाई कॉन्फिडेंस का कमी नहीं था बीच में शायद, हाँ किंग्स कप में आई थिंक अच्छा, अगर हम लोग और अच्छा करते तो अच्छा होता, बट नहीं है।
अभी हम लोग के पास सुनील छेत्री भी आ गया, आई थिंक होपफुली हम लोग आगे ही बढ़ेंगे मल्लिका जो ना, मैं तो आपके साथ पूरा सहमत हूँ। और मर्डेका कप जीतने के साथ साथ पहली बार हम लोग मर्डेका कप जीतेंगे, जीतते हैं तो सो Yeah. मेरा पूरा विश्वास है ये टीम कर सकती, जीत सकती है मर्डेका। Yeah, Shan, again, follow up on Suresh because Akash is saying it's a change. It's a chance for Suresh to claim his place in the 11 because Jeekson's absent. Will he do it? Do you think if Suresh gives a good performance, is it going to change the coach's mind? Is it a possibility? See, if he does good, तो it's nothing like it. So coach always wants options, and it's a good attention a coach wants. मतलब कोई भी कोच चाहते हैं जो उनके जितने भी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में रहे, तो एक अच्छा सरदर्द है कोच के लिए, एक अच्छा सरदर्द है। वो सोचते रहते हैं ये प्लेयर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये प्लेयर भी अच्छा खेल रहे, फिर एक अच्छा हेडेक होता है, एक अच्छा कंपटीशन बिल्डअप करता है टीम में। मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी है, मैं आपसे सहमत हूँ इस बारे में, एक पॉसिबिलिटी तो है। अगर अच्छा करते हैं तो यू नेवर नो क्या होता है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी है, ये बात मैं मानता हूँ, आपको आपसे सहमत हूँ। Fair enough. Just a small topic that we didn't get to touch about yesterday, and I think there's been a lot of talk about it in world football. Just moving away from Indian football just for like a minute, Eden Hazard's retirement. Of course, he's a great servant of the game. He's played for Chelsea, ex-Real Madrid. Arava, any favorite memories for Hazard? Once the news came out, how do you feel about it? Just 32. He's been part of that golden Belgian generation, right? With Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, to name two, with Toby Alderweireld and all these guys, Johan van Tongen, Thibaut Courtois, was a little younger than these guys. So from that perspective, I think it was most probably coming with injuries and problems at Real Madrid. And most probably in hindsight, it would have been wiser to stay at Chelsea rather than go away. He would most probably have also won the Champions League with them. So sometimes, don't follow the money, follow your heart. But in this, I think a great player, lovely player, but that golden generation missed the opportunity to win either the Euros or the World Cup. So that's, I think, most probably he will have a little bit of regret with his career. And just how do you feel like when players retire so early, 32, just he's barely, like similar to JJ in India in a lot of ways, like guys who retire early. What? How do you feel? Because it's Shine feels old. Shine simply then feels old. नहीं, मैं ओना से एग्री कर, ये क्या है ना, ये एज अ प्लेयर हमारे प्लेयर्स की, ऐसे भी कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर जो खेलती है फुटबॉल, जो लोग खेलते हैं उनका उतना लाइफ नहीं रहती। जैसा जहाँ पर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम लोग 30-35 साल उस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, या हमारे प्रोफेशनल फील्ड में। और फुटबॉलर्स या कोई भी स्पोर्ट्समैन का लाइफ बहुत लिमिटेड रहता है, और उसमें भी अगर हम लोग शॉर्टन हो जाएंगे एज अ फुटबॉल, एज अ स्पोर्ट्स, आपको पता है हाँ पैसा है, सब कुछ है अभी। आई थिंक ड्यू टू आईएसएल मनी हैज कम इन, प्लेयर्स अभी अच्छे पेड होते हैं, पर जब करियर छोटा हो जाता है, सबसे बड़ा होता है उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है वो भी कम हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात चीज हम लोग नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मनी इज समथिंग which is needed to run your household for till the end of your life. So ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब कट शॉर्टेड होता है, obviously it takes a financial toll to a player, ये होता ही होता है, but now there are good options also. But not for Eden Hazard, right? I mean, he's earned enough at Chelsea and Real Madrid. मैं as a whole बता रहा हूँ। Actually he asked this question that अगर किसी का शॉर्टेड हो जाता, मैं उसका एग्जांपल दे, और ये एक होता है। ईडन हज़ार्ड, देखिए इट्स अ प्लेयर। कभी-कभी जो ईडन हज़ार्ड का बारे में कभी-कभी लगता है, मेरे को लगता है जब होता है ना हम लोग का 4 जो हम लोग के नीड्स रहते हैं वो अगर फुलफिल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, उनके पास ना और मोटिवेशन नहीं रहता आगे क्या करने का, मेरे को क्या करने का, मैं आई थिंक आई हैव अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ। तो ये चीज एक हो जाता है। तो ईडन हज़ार्ड के क्षेत्र में वो हुआ है जो मेरे को लगता है, आई थिंक उनको लगा है एज एन इंडिविजुअल, एक आदमी को लगा है मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हूँ, आई थिंक। और ये मैन टू मैन वेरी करता है, किसी के लिए वर्ल्ड कप जीतना होगा, किसी के लिए आईएसएल जीतना इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए आई लीग जीतना होगा। ये डिपेंड करता है कौन कहीं पे खड़ा है लाइफ में, कौन किस जगह पे खड़ा है।
तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ईडन हजार्ड का जो रिटायरमेंट है, मैं मेरे को लगता है ही इज बेसिकली बिकॉज उनको लगा है, आई थिंक ही डजंट वांट टू गो। आई थिंक और वो हो ही सकता है, कोई भी इंडिविजुअल में आ सकता है, खराब लगता है ऑब्वियसली, उनके जो फैंस हैं उनको खराब लगेगा, आई थिंक ही हिमसेल्फ को भी खराब लगेगा पहला कुछ दिन जब वो नहीं रहेंगे, बट आस्ते आस्ते वो कैसे भी वो एडजस्ट कर लेंगे। आई थिंक खराब लगता है फॉर एवरीबॉडी, इट्स आई थिंक प्लेयर जितना दिन खेल सके बहुत अच्छा है। Yeah, exactly. Fair enough. Shan Sabri, Deepak wants to know your thoughts on Preetham being left out of the squad. Was it a mistake against Mumbai for you? नहीं नहीं, प्रीतम तो कोई जगह में ही नहीं है अभी नेशनल स्क्वाड में आ पाए। पीपल हैज गॉट मी रॉन्ग, कोई आदमी मेरे को पूछ रहा कमेंट सेक्शन में दैट प्रीतम के लिए मैं बैठ किया था। मैं प्रीतम के लिए क्या बोला था उस दिन, इफ आई कंपेयर महताब, हम लोग का जो पोजीशन वाइज जो हुआ था, और आई थिंक प्रीतम को मैंने आगे रखा था। और अब मैच में देखो तो प्रीतम सीजन कैंपेनर है भाई, इसमें कुछ मेरा कोई बायसनेस नहीं है। प्रीतम अभी नेशनल टीम में कॉल अप डिजर्व नहीं करता, वो भी मैं बोल रहा हूँ, आई एम ओपनली में ये बात बोल। तो आई थिंक अभी जो हमारे पास ऑप्शन है, तो आई थिंक ईगोर हैज सिलेक्टेड द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ, आई थिंक प्रीतम डजंट डिजर्व टू बी इन दिस स्क्वाड राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक वी हैव गॉट बेटर प्लेयर्स राइट नाउ टू बी इन द नेशनल स्क्वाड according to me. Pretty straightforward. MKD is asking where's Harry. He's having a bit of a network issue, which is why he's on and off. मैं सबको बोलूं एकदम हैरी भाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, हैरी भाई आ जाएंगे। मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज अगर आप स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किए जरूर कीजिएगा। स्पोर्ट्स खबरी, इंडियन फूड एंड फुटबॉल, अरुण फूड और क्यूरियस हैरी हिरेन भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली डोज ऑफ अपडेट मिलेगा भारतीय फुटबॉल को लेके। हम लोग चाह रहे हैं 10 बजे हर दिन यहाँ पर एकजुट होके एक कंटेंट बनाने का, तो आप लोग अगर हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लाइक करके सब्सक्राइब करके, ये हमारा एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन का काम करेगा। हमको लगेगा दैट हम लोग आपसे जुड़ पाए हैं, तो प्लीज कीजिएगा। Shaggy was saying Preetham not been good so far for Kerala Blasters. Quick word on him. Surprised he's not a part of the Indian setup now. Yeah, but He has been good and bad in patches, I would say, right? And I think that's it. It would be right to say about a lot of players so far this season. I think there's not one player where you say, he's had 2-3 exceptional matches, because we're still early in the season. And the question is, as Shine has said, the question is if you're going to fall back on experience at some stage, and that would be an interesting thing. There are certain players fighting for this position, is that none of them are perfect. I think that's the biggest challenge. None of them are perfect. All of them can have a mistake in their game, and that's something which makes it very, very tricky for the coach who to take, who not to take, because again, also in a position as right back, you have 4, 5, 6 options. सही बात। Exactly. Yeah, Shan, you wanted to add? मैं ये बोलूँ नहीं, मैं अरुणाव के साथ एग्री कर, प्रीतम के बारे में हम लोग बोल चुके हैं। आई थिंक कार्तिक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, कार्तिक सिंह राजपूत ने। वो पूछ रहे हैं व्हाट शुड एएफएफ डू टू प्रोड्यूस गुड इंडियन स्ट्राइकर्स। ये मैं अरुणाव से सुनना चाहता हूँ, कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मेरा एक अलग थ्योरी है। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ ये बात बोलूं कहीं पे। कार्तिक ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन डाला यहाँ पर, आई थिंक क्वेश्चन आप ले लो। आई थिंक अरुणाव, आपको क्या लगता है कैसे एएफएफ एक कैसे प्लान बनाए जो स्ट्राइकर्स बनाने का, कैसे हम लोग at youth level it's not a problem. It's about exposure in the transitional period from 16 to 21, 22. And for that, I think Indian Arrows is something which I would like to see again in the future, because it gives the chance to young Indian players, not only strikers but in all positions, to play in the I-League. And the point here is also that we speak mainly about the strikers, but we also have to speak about the spine of a team, right? Which starts with a goalkeeper, with centre backs, with central midfielders, with attacking midfielders. So that is something which I think is very, very important, and that has given us players, from the start when Bob Houghton and Contol had the idea. Gurpreet Singh Sandhu is a product of that. Preetham himself, Prabir Das is a product of that. Pronoy Halder, JJ, Dika, all these guys
have come out in the earlier days. Vikram Pratap is one of the later ones who's come out. Parthiv Gogoi has also played for the Indian Arrows. So therefore, I think that exposure for 1 or 2 years also helps you. Look at Dheeraj, but especially Prabsukhan Gill, right? Prabsukhan was always a substitute goalkeeper with the Indian youth teams. He was never a number one. But that time when Dheeraj went off to Scotland for his training with Motherwell, that is where this is that for example, a Prabsukhan Gill cemented his place and thereafter went to the Blasters and then start showing what he's capable of. एकदम Well, yeah. एकदम Hopefully that's अच्छा yeah. मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. आई थिंक ठीक बताया उन्होंने. आई थिंक मल्लिकार्जुन हिरामत भी एक बात बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं इवन आवर अंडर 17 स्ट्राइकर्स आर गुड, दे नीड सम गुड एक्सपोजर. स्कोर्स अगेंस्ट वियतनाम और जापान के टीम के अगेंस्ट गोल किए थे. ये बात मैं सहमत हूँ उनके साथ. और साथ साथ ये भी मैं एक चीज अवनावता से पूछना चाहता हूँ कि वो उस जगह पे रहे हैं, उनको पता होगा ये चीज. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अवनावता ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने स्टीफन से भी बहुत बार बात किया था इसको लेके. ऐसे क्या कर सकते हैं क्या हम लोग इन फ्यूचर, अगर आई लीग में या नेशनल आई लीग में बोलिए भाई आईएसएल में, आईएसएल में अगर पॉसिबल, अगर आई लीग में हम लोग ऐसे फॉर्मूला में जा सकते हैं तो एक इंडियन स्ट्राइकर आपको खिलाना ही है. अगर स्ट्राइकर नहीं बन रहे हैं तो ऐसा कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? No, you can't, because I will then say as a coach I'm playing a system without a striker. I'll say I'll play with a false 9 or something. It's not possible. It's the only options are to reduce foreigners. But again, even if you let's say you reduce it to 2 foreigners, which 2 positions will they play? Likely centre back, and the other one's going to be a striker. Those 2 positions are gone. So that's the point, right? You have to also see is this in the long term good also for the local leagues? That you don't have your better quality foreigners coming in. Again, is that a challenge that the boys need at that age? So there are pros and cons for all of these decisions. There is no straight cut answer. There's no one solution to this, because countries who have banned foreigners, the quality of the league goes dramatically down. Reducing foreigners, I think it's a completely different topic itself, and it's something that I don't think we can go less than 4. It's just then the quality, of course, it drops. I mean, you've seen when Indian teams are now playing abroad, that with 6 foreigners, it's a different game than when they're playing with 4. So I take Mumbai City as an example. If they're playing with 5 or 6 foreigners, it is very, very likely that the second centre back then suddenly becomes Tiri as a foreigner. Yeah. Which means Mehtab loses his position, has to go wide if he wants to stay in the team. So these are, again, and that makes it it's a difficult one. And for a striker, again, Vidyasagar being one of those examples we spoke about in the last few days. Decent striker at under 19 level for East Bengal, scored quite a number of goals, didn't really make it to the East Bengal senior team, then goes back to his home state, has an exceptional season for Trau, goes to the ISL to BFC, has little to no playing time, and then goes on to play for Blasters, and I've not seen much of him. Siva Sakti is an exception, I would think, last season, breakthrough. But after the injury, correct me, Rahul, I don't see the same Siva Shakti that he was last season. Yeah, he's not been the same. So that's your concern. And it's not going to happen. So therefore, the boys have to fight. Maybe at some stage, even Indian strikers need to think of, maybe it makes more sense to go abroad and try my luck abroad. But then still, even if you're a bench or a squad player, the money in the Indian Super League and the ISL is too high for a player to try your luck abroad. And that's another fact that we have. And we've spoken about it as well. I think Aunavda यहाँ पर दीपक दास ने अच्छा कमेंट डाला है. उसने बोला है, I wish a club comes that plays foreign goalkeeper and 3 defenders. I think मैं भी चाहता हूँ दीपक, अगर ऐसा हो तो कुछ नहीं है. ऐसा अगर कोई क्लब करता है तो कुछ स्ट्राइकर अगर उभर आए तो फॉर्मूला हो सकता है. हम लोग Nice thought, but it's not going to happen. ये बात है.
बट क्या कर सकते हैं हम लोग, थॉट ही लगा सकते हैं हम लोग को। बहुत दिन से मैं बहुत बार सोचा हूँ कैसे सुनील छेत्री का जगह ला जाए। हम लोग अरुणावदा के साथ में बहुत बार डिस्कस किया हूँ क्या कौन होगा इसके बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए। हाँ Exactly. राहुल बताओ। No, just on the same topic, before we wrap up, guys, who is the best Indian striker right now after Sunil Chhetri, according to you guys? Which Indian striker do you think, if Sunil is injured, who plays instead of him? If you were the manager, who would you go with? अगर फिट रहे, अगर कोई फिट रहे, अगर मेरे को पूछता है कोई, अगर फिटनेस इज नॉट एन कंसर्न, मैं ईशान पंडिता के साथ जाऊंगा। बिकॉज Okay. एटलीस्ट उसको गोल का समझ है, ही नोज द गोल, मतलब गोल का जो एरिया है, ही समबडी। और स्ट्राइकर को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, उनको गोल का समझ होना चाहिए, गोल कैसे हो सकता है। उनको ये गोल का नजरिया आ जाता है, उनको कैसे भी वो जब भी आते हैं, 5 मिनट के लिए उतरे या 10 मिनट के लिए उतरे या 15 मिनट के लिए, पर उनका गोल का समझ है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाल फिलहाल उन्होंने जो साइन किया एबीएफसी में, मैं अभी चोट उनका जब इंजरी हुआ था, मैं मिला था उनसे कॉन्टिनेंटल कप के दौरान, एंड खराब लगा जब यूएस मोस्ट लाइकली उनके साथ ईस्ट बंगाल का भी बात चल रहा था लास्ट मोमेंट इवेंट फॉर केरला ब्लास्टर्स। सो उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वहां पर, अगर वो खेलते हैं तो। आई थिंक अगर वो फिट हो जाए, आई थिंक वो सुनील छेत्री की जगह 100% ले सकते हैं, क्योंकि उनका टेक्निकलिटी सही है, जो इम्पोर्टेंट है। टेक्निकलिटी साउंड है, टेक्निकल वाइज भी साउंड है, उसको थोड़ा गेम टाइम चाहिए मेरे को लगता है। दिस प्लेयर कैन कम टू रेस्क्यू अस आफ्टर सुनील छेत्री। Interesting. Arnava, agree? My issue with Ishan is he needs 90-minute matches under his belt. And to me, he lacks that whole match experience. He's, for me, the perfect player to come in the last 20 minutes and get you goals. He's not a starter for me. So, given the current scenario, I would think, looking at whoever was available to us, most probably Manveer Singh is our best option. Fair enough. Fair enough. So, and the others, of course, people are making fun of Rahim Ali and others. Well, guys, we don't have other players in that position. That's the reality. So give those players a little bit of respect for that, right? So, yeah, let's see. I just want an opinion from you guys about Goalkeeper, because we saw him for a bit. Different profile of striker. Would you guys be interested in seeing him, somebody like that, play as India's number 9? Because tall, strong guy who can hold the ball up. देखो राहुल, मैं उनका गेम देखा था लास्ट बार जो खेले थे, वो जब एशियन क्वालिफायर्स में, जब वो गोल दागे भी थे अच्छे टीम में, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट भी वो गोल किए थे बहुत अच्छा। ठीक है, गुरकीरत सिंह अच्छी प्लेयर है, नो डाउट। मगर मैं अरुणावदा से इससे पहले ही बात किया हूँ इसको लेके, गुरकीरत क्या जैसा प्लेयर, क्या मुंबई सिटी एफसी उसको प्लेइंग टाइम दे पाएगा, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके बहुत सारे इंडियन के उभरते हुए जो स्ट्राइकर आए थे मार्केट में, वो चले गए बिकॉज वो कुछ ऐसे क्लब में साइन किए जहां पर उनको गेम टाइम नहीं मिला। सो गुरकीरत के लिए अगर मैं गुरकीरत की जगह होता या गुरकीरत के आसपास रहता, मैं तो 100% बोलता तुम ऐसे क्लब में जाओ जहां पर आपको कुछ गेम टाइम आपको एश्योर किया जाएगा, कुछ गेम टाइम। क्योंकि मुंबई सिटी एफसी का टीम ऐसे ही स्ट्रांग है, इसमें मुंबई सिटी के एफसी का कोई कसूर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा उनका कसूर है। उनका टीम काफी स्ट्रांग टीम है, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक गुरकीरत सिंह जैसे प्लेयर जो बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, आई थिंक सचमुच उनका जो मतलब इज अ वेरी पावरफुल स्ट्राइकर, बहुत पावरफुल स्ट्राइकर है। वो खेलते हैं तब लगता है गोल होने वाला है। तो गुरकीरत के एज भी उनके साइड में है। मैं चाहूंगा वो नेक्स्ट सीजन या बाद में लोन डील से कोई और क्लब में जाए जहां पर उनको टाइम मिले। और हाल फिलहाल में 2-3 क्लब इंटरेस्टेड भी थे उनको लेने के लिए लोन डील में, बट वो डील नहीं हो पाया। सो दैट्स सैड लक, बट आई थिंक गुरकीरत सिंह हैज अ वेरी गुड फ्यूचर। इंडियन जर्सी में अच्छा ले जाएंगे इंडियन फुटबॉल को। और सिर्फ उनको कुछ वाइज डिसीजन लेना है, जो हाल फिलहाल बहुत सारे इंडियन स्ट्राइकर ने नहीं लिया है, वही मेरे को डर लगता है। सो ही शुड चूज हिज कार्ड्स प्रॉपर्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Gurukirat has potential, has shown it, especially at the under 20 level. Has that desire and fight. I think he and Vikram Pratap have shown also in that match against the Blasters the other night that they're not going to stand down. But he needs time, and he needs match time. It's one of the reasons why
Nikom has gone to Inter Kashi from Mumbai City to get some game time in the I-League. And that's the challenge. How do you get it at Mumbai City? Mumbai City also doesn't want to send him in away and sort of strengthen other teams, right? So potentially, but the question is, would he also pay at other teams? That's also the question, right? Because at the end of the day, even in a smaller team, there will be a foreigner in front of you as a striker. I mean, let's face the fact that Sunil Chhetri in a one striker situation is not going to be your number one striker. Yeah. And that's the thing. And Vikram, to me, doesn't look like an out and out number 9. To me, Vikram is better on the wings. And Suhail Bhatt is being mentioned. Suhail Bhatt does not have the experience of even playing ISL. Forget going into the national team. You have to, it needs time. All these players you guys are mentioning, all these youngsters, they need time. If they're 17, 18, 19, 20, with little to no time in the ISL, it will be very, very difficult even to get a shout into the national team. Strikers is a different thing, as said. I'd like to see how David of Mohammedan Sporting does, who has been destroying defenses in the Calcutta League and also did that in the Durand Cup. But again, I-League is another different ball game, and I-League to ISL is another step up. Yeah. Well, we just have to carefully observe these guys. Let's hope that we do get a replacement soon enough before Sunil Chhetri hangs his boots and the guy can come in and step in for the big man. Thanks so much, guys, for joining in. Please do like, share, and subscribe. Follow the channels Indian Food and Football, Arun Food, SportsKhabri, and Curious Harry. Again, we'll be back to talk about more Indian football next time. Thank you. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night.